Sir, our food productivity is very low. China's rice yield per hectare is twice that of India. Even Indonesia and Vietnam are 50% more in terms of their yield per hectare. Sir, even Punjab, which is a developed agricultural state, has a yield per hectare of 3.8 million tons when the international average is 4.3 tons. Quite obviously, sir, if our attempt is to reach those people who are at the very lowest end of the socio-economic spectrum, agriculture needs a massive boost in productivity, a new investment, a new vision, a new roadmap for this sector, which continues to go at what was derisively called the Hindu rate of growth, and even today is targeted as low as 4%. To be honest, sir, the finance minister does not disagree. In his speech, he says, and I quote, "We agree that a major portion of our population is dependent on agriculture for livelihood." He speaks of a technology-driven second green revolution. He emphasizes the need to step up investment, both public and private. And in Rashtrapati Ji's Abhibhashan, which laid down the broad framework and goals of this government, it was said, he said that he wants to convert farming into a profitable venture through scientific practices and agro-technology. The rhetoric, the intent is there, sir. What is actually been given? Sir, it has been mentioned also. 100 crores for research for 2 more institutes on the model of PUSA. Sir, our Prime Minister has just returned from Brazil with what was obviously a very successful meeting. Brazil spends 1.7% of its GDP on research on agriculture. 100 crores. 200 crores for 4 agricultural universities. 100 crores for a nationwide soil health card mission scheme, sir. 100 crores for a national adaptation fund to meet the challenge of climate change. And as Mr. Roy said, sir, 50 crores for cattle breeding nationwide and the kind of relationship between agriculture and cattle breeding and livestock. So the total of this, it is listed as highlights of the budget, is 550 crores. I am not doubting the validity of other sectors, but national highways, sir, for instance, important in its own level, 37,880 crores. Ports, 11,635 crores. Agriculture, sir, through the highlighted schemes, 550 crores. It is true, sir, that amounts have been allocated for agricultural credit to be advanced. Sir, I ask this as a question. This is a continuation of old policies. But in fact, even in terms of agricultural credit, the allocation has been reduced. In 2013-14, the total credit allocation for agriculture and allied activities was 10,036 crores. In this budget, it is 10,026 crores. Now, as far as agricultural credits, sir, advanced by scheduled commercial banks, I would like to bring to the notice of the Honorable Finance Minister that the disbursement is completely skewed. Sir, the Eastern India, comprising Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Sikkim, Andaman, Nicobar, they get 8.8% of what is disbursed through the commercial banks. The northern region gets 20%, the western region gets 15%, southern India gets 38.5%, 8.8% is what eastern India gets, and Bihar, with a population which is almost 10% that of India, gets only 2.3%. Sir, the third problem in this is, you may increase, but you have not, but even if you increase the allocation in terms of credit to the farmer, so you must recognize most farmers live at subsistence level. They cannot avail of these loans. Sometimes they do not even have the adequate title in order to be able to be entitled for that loan. Sir, in my party's manifesto, and I will be very happy to share it,
there were at least 10 points made on what you could do in order to ensure that that credit which can be made available to the needy and the poor and the marginal and the subsistence farmer, how can we make that available? I would urge the Honorable Finance Minister to have a look at that in order to see how credit can actually reach the farmers. So, irrigation. I mean, this is a house which is directly linked in many ways, sir, to the grassroots reality of India. Irrigation and agriculture, they are so linked, sir, and we know the truth. 64% of our land is dependent on the vagaries of the monsoons. We also know, sir, that this year we are likely to go through what could be a partial drought, so the necessity of allocation in this sector on a far more magnanimous and dynamic scale was self-evident. We also know that only about 30% of the net cultivated areas, sir, have benefited from irrigation projects that have been implemented so far. Again, sir, the intention is clear. Rashtrapati ji in his Abhibhashan said, sir, my government is committed to giving high priority to water security. It will complete long pending irrigation projects on priority and launch the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana with the motto of Har Khet Ko Pani. In your budget, sir, the Honorable Finance Minister said, bulk of our farmlands are rain-fed and dependent on monsoons. Therefore, there is a need to provide assured irrigation to mitigate risks, sir. Sir, aware of the situation and having made their intent clear, I am perplexed that under their flagship scheme, which is the Pradhan Mantri Kisai Sinchai Yojana, an allocation of 1,000 crores has been made, sir. I question this only in terms of the priorities of the budget. Which India are we addressing ourselves to? This is the question which policy makers have to find answers to. In our manifesto, sir, and I don't want this to be about one party versus the other. In our manifesto, in the Janata Dal United, we have spoken about the urgent need to create a national irrigation authority. But obviously, the kind of emphasis and the detailing that needs to go in priorities, sir, is missing. Sir, it has been mentioned other vulnerable sectors such as women. I mean, 150 crores for increasing safety of women in all major cities. Sir, 100 crores for Beti Bachao, Beti Padhao. Sir, there are innovative schemes, sir. We are looking at the future of this country. Once again, sir, I make a reference to Bihar because there has been a veritable revolution there in terms of the education of the girl child. The landscape has changed. You see girls on cycles, dressed in uniforms, going to schools across any part of Bihar through innovative schemes and through investments. 100 crores. What are our priorities? Sir, I don't want to make this again uselessly acrimonious, but 100 crores for modernization of madrasas, 15 rupees per madrasa. What does this allocation mean? And again, it has been mentioned, but 200 crores for a statue for a man we all greatly respect. But knowing the man, if he knew that such small amounts has been given for other major priorities, he may have been rather embarrassed by a statue for himself of that cost. This is the question before us. Sir, education and health, I have a question for the Honorable and Finance Minister because it touches the lives again of the deprived and the vulnerable. It's a major priority for this nation. Sir, I am unable to understand that the revenue budget, and I am not an economist, so I am willing to be corrected. Sir, the revenue budget has been slashed from an outlay of 67,301 crores for education, sport, art and culture in 2013-14. The allocation in 2014-15 has been reduced to 31,641 crores. This represents a reduction of 53%.
But the outlay on education has gone up by 11% in terms of capital expenditure. So I would like to ask the Honorable Finance Minister that if revenue budgets have been slashed to such an extent and fixed costs have to be met on salaries, on pensions, on maintenance, on equipment, how is this outlay going to be achieved? And let me say, sir, one of the problems facing us is the quality of education in our schools. We have to raise the quality of the teachers who are so trained, sir. Sir, only 30 crores for a school assessment program. Similar is the health. It's an exceptionally important matter. There are more malnutrition children living in India than in sub-Saharan Africa, sir. More people die of such simple diseases like dysentery and malaria in India than anywhere else. To my mind, sir, again there is a huge deduction. 15,644 crores in 2013-14 to 11,114 crores in 2014-15, representing a slashing of 29%. And as a percentage of the budget, sir, and this is really something, sir, which I hope he can provide a clarification for, in a country where this sector has so much importance, sir, as a percentage of the total budget, the allocation for health has come down from an already unbelievable low of 1% of the budget to 0.7% of the budget for a country like ours. Sir, it's an important matter, sir. I say this because the Planning Commission has said that the government-run healthcare system is short of doctors by 76%. We have less than half the number of nurses we need, and laboratory technicians are short by 80%. Sir, the Honorable FM has proposed the setting up of AIIMS-like institutions in several states. He has provided a token sum of 500 crores for this. But I want to submit to him with great humility, sir, this is a drop in the ocean. The country needs 12 lakh doctors and 36 lakh nurses in order to meet WHO norms. So we have only 5.5 lakh doctors and 4 lakh nurses. I want to bring to the notice of the attention of this House, sir, that in 2011, China admitted 8 lakh students to medical institutions. Our figure was an abysmal 42,000. Sir, this sector needs attention. There are other things about China to emulate apart from their bullet trains. Sir, about equitable, balanced regional development. Sir, I speak also, Council of States, I speak for the interests of Bihar, sir. I think, sir, please, sir, it's my maiden speech, sir. 17 minutes, 3 more minutes, that's all. Sir, 3 more minutes. 3 more minutes. Okay. Sir, I want to say that in this budget, there has been an institutional neglect of the least developed states, and the neglect of Bihar, which has voted so strongly in favor of the BJP in the last parliamentary election, almost amounts to a betrayal of the trust of the people. Sir, where is Bihar, sir? In their scheme of industrial corridors and smart cities, sir. Where is Bihar in their scheme of SEZs? Where is Bihar, sir, in special schemes needed to reduce poverty, because Bihar has had the highest GSDP rate in the country and has also done well in terms of the highest number of people redeemed from below the poverty line. Sir, there are no schemes. Sir, we have asked for affirmative action for least developed states. The BJP was a party to the call for the special category status to Bihar. You were there fighting with us at your own level for it. There is no mention of this affirmative action, sir. Sir, this is a great lacuna in the budget, sir. I want to, sir, end by saying that perhaps the approach of the foreign minister was that let there be growth irrespective of its inclusive content. But I want to say, sir, even on that there are grave doubts in terms of many of the schemes, including above all the sustainability
of a GDP deficit of 4.1%, the concessions that are marginally given to the middle class, etc. Yes, so, sir, conclude. in conclusion, I want Please to say, conclude. in conclusion, sir, I crave your indulgence for a minute more, sir. I think the real problem, sir, of this budget is that it falls flat between many stools because it lacks a central roadmap and a vision. Na khuda hi mila, na visale sanam, sir. The intent was good, sir. There is a couplet of Faiz, sir. These days they have a very good relationship with Pakistan. So poet Faiz made that couplet. Dil se to har muamla karke chale the saaf hum. दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई. सर, द स्लोगन was सबका साथ सबका विकास. I am sorry, I do not wish to sound acrimonious. It sometimes appears सबका वोट कुछ का विकास. अच्छे दिन आने वाले नहीं है सर, अपने दिन आने वाले. And therefore we have to think, sir, and I will end by just 4 lines from a great leader. 4 lines from a great leader, sir, please allow me. Because this great leader wrote in a book which I had the great privilege to translate on his request. His poems from Hindi into English. His name is Atal Bihari Vajpayee. The BJP now, sir, is at a pinnacle. They have an absolute majority. They look at the stars, but their feet have to be on the ground, and this is what Mr. Atal Bihari Vajpayee said, sir. सच्चाई ये है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती. सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है. ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है. थैंक यू सर. ओके, धन्यवाद. Now, Sri Mudhu Karupan, is it a maiden speech for you? Maiden speech? Sir, this is a section of maiden. Okay. Sir, don't put Is it? Yes, maiden speech. Then 15 minutes. Pardon? 15 minutes. Very well, sir. My bad. Sir, Honorable Deputy You are Chairman, also sir, there. this is my maiden speech. I am nominated and elected as member of this House from AIDMK party. My party supremo and its General Secretary, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puranchi Thalaivi Amma, and Honorable Amma is a revolutionary leader. This greatest opportunity is given to me. I am one among 250 members of this August House. So first of all, my sincere thanks to Honorable Puranchi Thalaivi Amma, the Chief Minister of Tamil Nadu. Regarding the Union Budget of 2014 to 2015, my leader welcomes the Union Budget. I also welcoming it. Sir, I am saying that many of the announcements made in the President's address have been given concrete shape in the budget, sir. Further, sir, the setting up of the Expenditure Management Commission is a welcome development, and I do hope that the Commission will address the issue of expenditure management in the appropriate socio-economic context of the country and keeping the welfare objective in view, sir. I expect there will be opportunities to voice our concerns regarding ensuring food and fuel security of the poor and weaker sections before the Commission, sir. And also Honorable Amma welcomes the assurance of the Honorable Finance Minister that he will be more than fair to the states in addressing their concerns regarding the implementation of GST relating to both fiscal autonomy and compensation of revenue loss issues. So the proposals relating to the permitting FDI need to be approached with caution. In particular, the proposal to permit manufacturing entities set up with FDI to sell their products through retail, including e-commerce platforms, should not extend to permitting FDI in retail. So again, I have to mention this, should not extend to permitting FDI in retail. So further welcome, sir,
the program to establish 100 smart cities, in which Ponderi is included as smart city in Tamil Nadu, for which I thank the Government of India. Again, I welcome the national industrial corridors, including Chennai to Bangalore Industrial Corridor and Vizag to Chennai Industrial Corridor, while linking Chennai and thereby helping neighboring states to take advantage of its natural strengths. But in further, sir, but do not benefit many backward regions and districts in Tamil Nadu, sir. So further, sir, my request that the Government of India must consider the further extension of these corridors within Tamil Nadu, sir. So further, sir, the Madurai to Thoothukudi Industrial Corridor proposed to be implemented by Tamil Nadu can be considered as part of the East Coast Corridor by extending to the Vizag to Chennai Corridor further south, sir. And also welcome the scheme to step up a textile mega cluster in Tamil Nadu, sir. Further welcoming the implementing programs for the differently abled. At least one of braille presses will be established in Tamil Nadu, sir. Further welcome, sir, announcing establishment of National Institute of Aging at Madras Medical College. Further, sir, the Tamil Nadu government has raised a letter from Government of India, that is the Union Minister for Health, to identify 3 or 4 suitable alternate locations for setting up of a new AIIMS hospital in the state, sir. But I also request the Government of India to kindly include Tamil Nadu in the first phase for setting up an AIIMS institution during current financial year itself, sir. For this purpose, sir, as recorded by the Government of India, the Amma's Tamil Nadu government has already identified the record extent of land at Chengalpet in Kanchipuram district, Pudukkottai town in Pudukkottai district, Chengipatti in Tanjore district, Perundurai in Erode district and Thopur in Madurai district, where lands with suitable road connectivity are already in the possession of the state government and its agencies, sir. Further, sir, I request the Government of India, the Tamil Nadu is included in the list of states in which an AIIMS institution would be set up during the current financial year, sir. I want to stress once again, sir, the AIIMS institution would be set up during the current financial of this year, sir. Further, sir, Tamil Nadu government has 19 medical colleges. The additional seats have been sanctioned but not yet get formal approval from the Medical Council of India, sir. For this academic year of 2014 to 2015, the Government of India is requested to impress upon the Medical Council of India to need to expedite the approvals and permit admissions because of the medical students, sir. Further again, sir, welcoming the measures to boost tourism, including proposals of heritage towns, including Kanchipuram and Velanganne. Further, sir, I would have been appreciated to include Sri Rangam. Further, sir, I invite to enhance the allocation for the modernization of police post scheme and also needs to support of setting up of the marine police station in Tamil Nadu, sir. Another important one is, sir, the river linkage. I urge the Government of India to have detailed study completed and earliest stage, sir. Further, sir, as far as my district is concerned in Tirunelveli, sir, the Thamaramarani river originates from the peak of the Podigai hills and the eastern slopes of Western Ghats, sir. The major tributaries of Thamaramarani river are Karayar, Manimuttar river, Kadananadi, Pachayar river and Chittar river, sir. The river flows in 2 districts of Tirunelveli and Thoothukudi, sir. The Thamaramarani river provides a large proportion of the water for irrigation and power generation for Tirunelveli district, sir. It is fed by both the monsoons, the southwest and the northeastern, sir. The river is the lifeline of the people of Tirunelveli district. It is a perennial water having copper tinge, sir. I request the Minister of Finance, the Honorable Leader of this August House, to include these holy rivers in the Kanka rejuvenation program for cleaning Thamaramarani river, sir. Further, sir, the shortfall in release of grants in aid, sir. The Government of India sanctioned and approved central schemes which were extended
which were executed by the state of Tamil Nadu, sir. The grants and aids are pending to release money, sir. There are major grants in aid due to the government of India up to 2013 to 2014. This has adversely affected the fiscal health of the state, sir. The 13th Finance Commission recommended a general performance grant of rupees 1,888 crore rupees, sir, to local bodies in Tamil Nadu for the period of 2011 to 2012 to 2014 to 2015, sir. As against this amount, so far, only 125 crore have been released up to 2013 to 2014, sir. The rest of the amount may be released to as early as possible. In further, sir, 5 flood protection works in Tamil Nadu accorded investment clearance by the Union Planning Commission in 2009 to 2010 and 2010 to 2011 for an amount of 613.43 crore rupees, sir, which central share 75% of 460.07 crore rupees, sir. All 5 works completed 2012 to 2013 and a total amount of rupees 625.77 crore rupees spent, sir. But the government of India has released a grant of only 59.82 crore rupees only, sir. So, Honorable Finance Minister of India and Honorable Minister for Water Resources, sir, to release the recommended grant of rupees 388.8 crore rupees to be released to the Tamil Nadu, sir. The further the grant for school education, that is Sarva Shiksha Abhiyan for the year of 2011 to 2012, the Ministry of Human Development had in 2013 to 2014 sanctioned the 438.38 crore rupees towards the committed liability of the teachers' salary component, sir, of which 65% central share works out to 284.95 crore rupees. As against this, Government of India released only 57 crores only, sir, and the balance of rupees 228 crore rupees is still awaited, sir. Further, sir, the right to education compensation scheme, sir, in this scheme, the reimburse amount of 25.13 crore rupees pending and request the Government of India to release this amount, sir. Further, sir, the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan scheme, sir, here is also pending, sir, for the year of 2011 to 2012. The revised PAP, that is the Project Approval Board, that is approval is 675.05 crore rupees, sir. The entire central government share is rupees 506.09 crore rupees, sir, and is not yet to be released, sir. It is to be released, sir. In addition, there are 13th Finance Commission grants for roads, bridge maintenance, slum improvements, coastal protection, renewable energy, and grants for post-matric scholarships for scheduled caste students, statistical strengthening projects, comprehensive handloom developing program under the revamped Central Road Fund and the Family Welfare Program, sir. Here is the total amount of pending grant is 1,576.8 crore rupees. These are all pending, sir, which may kindly be released at earliest, sir. Further, sir, the government of Tamil Nadu has implemented so many schemes such as the 20 kilogram rice free of cost is given every month to all ration card holders, ensure the welfare of the women, mixies, grinders and fans are distributed free of cost to all ration card holders. The scheme of free distribution of milk cows and coats to downtrodden people and fees. The 14 items are given free of cost, including the laptop, bicycle, textbooks, notebooks, geometry box, uniforms, etc. And further, sir, the implementation of Amma Unavagam, that is the low-cost restaurants, sir, and also Amma mineral water, sir. For the implementation of so many welfare schemes and developing schemes and promotion of infrastructures, the government of Tamil Nadu needs more money, sir. I request Honorable Prime Minister of India and also the Honorable Finance Minister, sir, to allot and sanction more money the state of Tamil Nadu, sir. And further, sir,
Further one point, sir. This is the essential thing, sir. The actual requirement of kerosene, as per the entitlement of the ration card holders in Tamil Nadu, is 65,140 kiloliters per month, sir. But as against this entitlement, the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India had allotted 59,780 kiloliters of kerosene per month up to March 2010, sir. Thereafter, sir, this allocation was successively reduced in 10 occasions in the last few years, sir. And further, sir, now the monthly allocation of kerosene for Tamil Nadu stands at just 29,056 kiloliter, which is only 45% of the state's requirement, sir. Further, sir, while we were hopeful that the trend of arbitrary and unjust reduction in kerosene allocation would be reversed and some of the cuts imposed by the previous UPA government would be restored, sir, it was disappointed to learn that, sir, even in the latest order dated 1st July 2014, the Tamil Nadu government has been allocated only the 29,060 kiloliter of kerosene per month, which was the same as was allocated for the preceding quarter, sir. So further, sir, I request the government of India in urgent to allot the entire requirement of 65,140 kiloliters of kerosene per month, sir. Okay, please. Now wind up, please. Wind up, please. Yes. That is In 15 further, minutes. sir, Madam speech means 15 minutes. In further, sir, I want to submit 2 or 3 minutes. Okay. It will take it, Okay, sir. take. Okay. Because the another sensation, my leader, the Chief Minister of Tamil Nadu and General Secretary of AIDMK party, Rajya Sabha, when she was member of this house, in the year of 1985, March 14th, she delivered a speech, sir. With your permission, sir, I have to read this speech, sir. That speech full, no, please. Not the full. You can quote. No, very briefly, sir. Quoting only. No. You can take maximum 2 or 3 minutes, not more than that. Sir, Not more than that. my leader delivered a speech. She represented for a particular cause, which is not yet completed. Still, it is going on. So, my leader says this. Sir, I am not arguing with the Indian foreign policy of non-interference as the internal affairs of another country. But where it involves the fishermen of our country, what is the use of our military might? She raised the point in the year of 1985. How do we justify the enormous expenditure every year on defense if we do not utilize that military might to provide protection to our own citizens, the fishermen of Rameswaram? How can the government of India afford to allow any country, big or small, to get impression that it can intrude with impunity into our territorial waters and attack and kill our citizens? So my leader, Rajya Sabha, raised this fisherman problem in the year of 1985 March, Your Honor. Okay. So far as the matter is not yet settled. That is, the permanent solution is the retrieval of the Kachethi. That is, as far as the Rameswaram is concerned, sir, this island is a small island of Kachethi, 285 acres in the Park state of, which is part of Rameswaram district. It was originally under the ownership of the Raja of Ramanathapuram. The Indian fishermen enjoyed traditional fishing rights in and around the Kachethi island and Park Bay, sir. And the two agreements were made in the year of 1974 and 76, sir. Then the Prime Minister was Mrs. Gandhi, and then the Chief Minister of Tamil Nadu, the leader of DMK, Mr. Karunanidhi, DMK leader, he did not take any effort to stop that agreement, Surana. No. You cannot criticize. Yes. Expense. Because my That is expense. Now, see, no. You sit down. Because See, Madhukarappan, he cannot. No, I will. You sit down. Okay. Since I will deal with. Sit down. Sit down.
You allow me. Hey, Tiruchi Shiva, you sit down. Sit down, I will deal with this. See, Mr. Mudugalapan, you cannot criticize a person who cannot come and defend here. Therefore, I am expunging that portion. No, I have done it. No, because what I say, two agreements were made in the year of 1974 and 76. At the time, the Prime Minister of India, Mrs. Gandhi, was the Prime Minister of India. Then the leader of DMK. So both are expunged. Both references expunged. Both references expunged. Sit down, I expunged it. Sit down, I expunged it. Sit down. I expunged it. Sit down. Yes. Both references expunged. Now close. It is 18 minutes. 18 minutes, please. Your time over. Time over. Yes, matter of 2 minutes. No, it's already 18 minutes. Sorry. No, I gave you 2 minutes. No, please. Yes. No, don't come to controversy unnecessarily. Yes, I gave you so much time. I need 1 minute to finish it. You want to settle the controversy? Yes. Okay. Because my leader has approached the Supreme Court of India. See, filed a petition. The matter is pending before the Supreme Court of India. The writ number 561 for 2008, which is pending the matter. The two agreements are challenged by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. When she was as General Secretary, as ordinary personality in person, she filed the case to these two agreements were unconstitutional. It is to be not valid. It is not valid. Okay. So the matter is pending, sir. Okay, now take your seat, please. So my final conclusion is, Please. the conclusion is, I heard the conclusion. because Please, we welcome the budget of this union budget of 2014 to 2015, and the betting areas of aids and grants, it is to be leased by the central government. All right. And the main point is, sir, the dispute of the fishermen, it is to be settled by the government of India. The retrieval of the country is the main aspect. It is to be settled. Thank you very much, sir. Yes. I once again to thank you. Thank you, sit down. I once again thankful to. Thank you. Dr. Purachit Talavi Amma, sir. Thank you very much. Thank you. Sri Naresh Agarwal. माननीय सभापति जी, आपको धन्यवाद। मैं बजट की आलोचना और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 2 लाइनों के साथ शुरू करूँगा। अच्छे दिनों का नाम न अब लीजिए जनाब, अच्छे दिनों के नाम से डरने लगे हैं लोग। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे थे, मैं समझता था बैठे रहेंगे, हो सकता कुछ और काम से गए हों। बड़े भाई हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं, शालीनता है, सादगी है, व्यवहार कुशल है, वाक्पटुता है, योग्यता है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी, आपने जब बजट पेश किया, शायद दूसरे दिन अगर आपने मीडिया में कमेंट पढ़ा होता, ज्यादातर अखबारों ने लिखा कि चिदंबरम के बजट पर आरएसएस की लिपस्टिक। ये इस मारे भी मैं सही कह रहा हूं कि अभी अगर पढ़ना जानते तो आप पढ़ लेते, ऐसे लिखा था। मैं इस मारे भी कह रहा हूं कि पता नहीं क्या इस नई सरकार को हो गया। चुनाव से पहले आदरणीय मोदी जी ने बहुत दिव्य स्वप्न दिखाए थे। ऐसा लगा था कि जैसे इस राम राज्य पूरा आ ही जाएगा। मैं और बात कहना चाहता हूं, हम लोग के यहाँ एक चिड़िया आती है टिटहरी। टिटहरी एक चिड़िया होती है, रात में जब सोती है तो चारों पैर ऊपर कर लेती है, और उसको ये टिटहरी, उसको ये गलतफहमी होती है कि आसमान को हमने अपने चारों पैर से रोक लिया। 2 पैर, 2, तो ऐसा लगता है कि कहीं आप लोगों को भी तो गलतफहमी नहीं हो गई। मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने जो अच्छे दिन या जो भी बातें कही थी, आज अगर आप जनता में कमेंट सुने जाके, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि 2 महीने में एडवर्स कमेंट आ जाएंगे, जिसको इतनी बड़ी मेजॉरिटी। क्या आपने बजट में नहीं दिया? गरीबों के लिए क्या दिया? देश को क्या दिया? देश की जो
जो देश की मानसिकता है, जो देश की सोच है, जो देश के लोगों को जरूरत है, वो बजट में कहां पर से दिखी? आपकी सरकार के ऊपर तो एक ही आरोप है कि बड़े लोगों की सरकार। मैं आगे आऊंगा उस पर। कानून व्यवस्था, चाहे आतंकवाद हो, अभी सवेरे प्रश्न हो रहा था। एक तो सरकार द्वारा प्रायोजित मीडिया ने ऐसा कह दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। ये तो अच्छा हुआ, हमारे एक साथी ने सवेरे प्रश्न किया। माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहे जहां ऊर्जा मंत्री थे। नक्शे कदम पे तो अब कौन किसके चल रहा है तो झा साहब बाद में बताएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, आपने खुद ही स्पष्ट आंकड़ों में कहा कि ठीक है, पूरे देश की आपने कानून व्यवस्था 2013 तक के आंकड़े दिए। उन आंकड़ों में बड़ा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की खराब है, महाराष्ट्र की खराब है और राजस्थान की खराब है। दो जगह आपकी सरकार है, एक जगह कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार। आप खुद कह रहे हैं, मैंने इसको सदन में रखा कि कम से कम इस सदन के माध्यम से देश की जनता के बीच संदेश तो जाएगा कि जो मीडिया में रोजाना चाहे बलात्कार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, एक उत्तर प्रदेश का नक्शा दिया जा रहा है, उस नक्शे को कम से कम सत्यता तो देश के सामने आनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा आपको खड़े होकर, माननीय गृह मंत्री जी को खड़े होकर करना चाहिए कि क्या देश की कानून व्यवस्था जो है, आपने इतने कड़े कड़े कानून बनाए, निर्भया कांड हुआ, आपने इतना बड़ा कानून, सख्त कानून बनाया, जल्दी जल्दी में लाए, लेकिन क्या देश में रेप रुक गए? क्या देश में अपराध रुक गए? मैंने हरदम कहा कि कानून बनाने से पहले जल्दी नहीं करना चाहिए, कानून बड़े सोच के और कानून विचार विमर्श करने के बाद बनाना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी में कानून बना दिया कि जैसे अब देश में रेप नहीं होगा। रेप ऐसा नहीं, इंटरनेशनल जो आपने रिकॉर्ड दिया है, विश्व में सबसे ज्यादा अगर बलात्कार कहीं हो रहे हैं तो अमेरिका में। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे ब्राजील, नंबर 3 पे इंग्लैंड और हिंदुस्तान दोनों आता है। तो जो विकसित देश हैं, जहां एडवांस है, जहां सेक्स फ्री है, वहां पर जब ये हाल है तो हमको अपने देश की मानसिकता को सोचना पड़ेगा, सामाजिक सोच को सोचना पड़ेगा। और जब तक उसको सोच के हम चीजों को नहीं जोड़कर इस देश का एक अच्छा कानून बनाएंगे, तब तक ये मत सोचिए कि देश से अपराध समाप्त हो जाएगा या अपराधी समाप्त हो जाएंगे। इस बारे में कह, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या। बजट में कोई प्रोविजन ही नहीं, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर किसी ने नहीं सोचा। मुझे याद है आदरणीय अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी। अटल जी ने देश की आबादी पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई, 1000 लोगों की करीब कमेटी बन गई थी। मैं समझ गया था कि कभी बैठक ही नहीं हो सकती। हाँ, उस कमेटी की कभी बैठक नहीं हुई। हम कहते हैं आप पहल करिए यहां पर से, आपको पहल करने में क्या। हम लोगों पे तो तुष्टीकरण की आप लोग आरोप लगा देते हैं, रोज हमारी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिनको हम सेकुलर कहते हैं उस पर आप तुष्टीकरण का आरोप लगा देते हैं। चलिए आप यहीं शुरुआत करिए। अगर देश की बढ़ती हुई आबादी को हमने नहीं रोका तो इस देश को जो आप सोने की चिड़िया की सोच रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान में राम राज्य सोच रहे हैं, कभी संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कल राम गोपाल जी जब ट्रेन पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं कि 20 साल तक आप बुलेट ट्रेन इस देश में नहीं चला सकते। मैं आपसे कहता हूं, चाहे हम आए चाहे आप आए, वहां कोई भी बैठे हैं, इस देश की बेसिक समस्या का समाधान कैसे होगा। मैंने आज सवेरे क्वेश्चन पूछा कि देश की बढ़ती हुई समस्या का समाधान कैसे करेंगे। क्या बढ़ती आबादी का मुख्य कारण गरीबी, मजदूरों में जागरूकता कमी। कहना देश भर के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब जो गरीब है कितना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट रेडियो मीडिया देखता है, पढ़ता है। तो आप एक कोई घोषणा करिए, सबसे सहयोग मांगिए। सब देश पूरा चिंतित है, ऐसा नहीं हम लोग वोटों ही की राजनीति कर रहे हैं। अगर देश नहीं तो वोट किसकी है। लेकिन इस पर चिंता तो करें। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जवाब में जरूर बताएं कि बढ़ती हुई आबादी पर क्या उन्होंने किया। मैंने कहा था कि सही है
कि इस सरकार को बनाने में देश के सारे पूंजीपति एक साथ हो गए। पाला इन्होंने, पलायन उधर कर गए। सही है, पाला इन्होंने। एक जमाना में पेट्रोलियम की पॉलिसी देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति के कहने बनती थी। एक मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री सिर्फ इस मारे हटा दिए गए, मैं नाम नहीं ले लूंगा, आप सब समझ गए होंगे किसका नाम हूं। देश का पेट्रोलियम सेक्रेटरी इस मारे बदल दिया गया क्योंकि उनके हित की बात नहीं हो रही थी। लेकिन आज क्या है, चुनाव में भी यही बात कही थी, अगर नहीं सत्यता है तो KG 6 बेसिन पे क्यों नहीं निर्णय होता? आप घोषणा कर दीजिए। और कोई होता, अगर एग्रीमेंट तोड़ देता तो अब तक एग्रीमेंट सरकार समाप्त कर देती। लेकिन बड़े पूंजीपति का मामला है, कहां पर से तोड़े। $4 का आप $8 करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप यहां घोषणा कर दीजिए, साफ साफ पता लग जाएगा। वो अड़े हैं 2012 से होने चाहिए बढ़े हुए रेट, रंगराजन कमेटी ने कहा 2014 से बढ़े हुए रेट होना चाहिए। सरकार में कोई तय नहीं कर पा रहा है। लड्डू भी खाना चाहते हैं लेकिन मुंह खोल नहीं रहे। अरे खोलिए मुंह में, लड्डू खाना है, अगर उनकी मदद करना तो खुल के कहिए हम मदद करना चाहता हूं, और नहीं मदद करना तो साफ साफ कहिए हम देश के लोगों के हित में नहीं बोल रहे। अभी अखबार में आया कि सिलेंडर और पेट्रोलियम से सब्सिडी और खाद्य से सब्सिडी घटाने की बात हो रही है। मैं तो चाहूंगा आप एक बात का आज विश्वास दिलाइए, जो नया कॉन्सेप्ट हो गया है। मुझे याद है पहले जिस दिन बजट पेश होता था, हरदम इस देश का बजट 25 तारीख को रेलवे, 25 फरवरी को, 28 को देश का बजट पेश होता था। देश का बजट जिस दिन पेश होता था, हिंदुस्तान भर देखता था कि हमें एक साल के लिए अपना घर की रोजी रोटी कैसे चलानी। जो तय हो जाता था वो जिस दिन उस दिन जो घोषणा होती थी 1 साल तक रहती थी। लेकिन आज तो नया हो गया कॉन्सेप्ट कि बजट में कोई टैक्स नहीं, उसके बाद टैक्स, बजट में मीठी मीठी घोषणा, उसके बाद कोई घोषणा वापस। तो मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी आज इस बात की घोषणा करें, फिर से उस कॉन्सेप्ट के लाएं जो देश के लोगों ने सोचा था सरकार से, कि हम आज जो घोषणा करेंगे, जो छूट देंगे, वो 27 फरवरी 2015 तक लागू रहेगी, बीच में बदली नहीं जाएगी। आप दीजिए, आप करिए घोषणा आप जनता के सामने। आप इतने वादे करके आए, इतनी बातें करके आए, तो फिर आपको इसको करने में क्या दिक्कत है? मैं तो चाहता हूं इसको आपको करना चाहिए। जब आप इधर बैठे थे, FDI का बड़ा विरोध कर रहे थे, हमारे साथ आप भी थे, हम तो सदन बाइकाट भी कर गए थे, कुछ दिन सदन चलने नहीं दिया था। अब तो FDI की बात हो रही है। अब तो आपने सब में 25-26% से बढ़ा के 49% कर दिया। लेकिन मृग मरीचिका पे कब तक चलेंगे? अगर आपको FDI वाकई में लाना है, इस देश में नई टेक्निक लाना है, तो फिर 49% की लिमिट पे आप नहीं ला पाएंगे। क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी अपनी टेक्निक जो है, जब तक वो 60-70% से ऊपर FDI नहीं ले लेगा, जब तक वो अपना वर्चस्व नहीं ले लेगा, तब तक FDI नहीं लाएगा। फिर आपको थोड़े दिन बाद यही कहना पड़ेगा कि हम रक्षा के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, ऑयल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र, इसके टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, सभी जगह हम FDI ला रहे हैं। तो अगर लाना तो भी ढंग से FDI लाइए। वैसे तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कह रखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी कि ना फुटकर ना थोक, हम दोनों में FDI नहीं मंजूर करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन अगर आपको देश में लाना है, सपना आप लोगों को दिखा रहे तो सही सपना दिखाइए। अब आप सोचे कि फ्रांस अपनी टेक्निक ले आएगा विमान बनाने की या वेपन बनाने की, इसराइल अपनी टेक्निक ले आएगा, 49% वो रुपया देगा और मालिक आप रहोगे, वो नौकर बना रहेगा, तो कौन अपनी टेक्निक देगा? जब तक 51% उसका शेयर नहीं होगा, जब तक वो उसका CMD नहीं बनेगा, उसका मैनेजमेंट नहीं होगा, वो क्यों अपनी टेक्निक लाएगा? तो आप इस पर भी जरा मैं चाहूंगा कि उत्तर में ये भी बात स्पष्ट हो जाए। PPP बहुत दिनों से सुन रहे श्रीमान, PPP जितने भी आपने PP के प्रोजेक्ट आज तक किए हैं, क्या उसमें कहीं भी आपको लाभ हुआ है? मैं उदाहरण के लिए 2 कह रहा हूं। रेलवे में आपने PPP किया, करीब 8 परियोजनाएं आपने लागू की, और CAG ने जो 2167 करोड़ रुपए की थी,
और इसमें करीब आपको अब तक परियोजना वालों ने 128 करोड़ फायदा ले लिया, लेकिन परियोजना आपकी पूरी नहीं की। आपको क्या फायदा हुआ? माइल पे तो सबसे बड़ा कैट ने जो आपत्ति करी, माइल बॉम्बे का एयरपोर्ट आपने दिया है, दिल्ली का भी दे दिया, बंबई का दिया। बंबई के एयरपोर्ट पे 2013 के दौरान माइल को 2,857 करोड़ रुपए की आमदनी हुई और उन्होंने सिर्फ 888 करोड़ रुपए निवेश किए। अगर इतने रुपए पे इतना प्रॉफिट देके आप पीपीपी लाना चाहते हैं तो फिर हमारे आरोप में कहां पर से खराबी, हमारे आरोप कहां पर से करा? तो मैं जो कहता पूंजीपतियों की सरकार, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है। महंगाई की बात आई, आपने कहा हम 3/7 लागू करेंगे, पूरे देश में छापे मारेंगे, लेकिन आप छापे नहीं मार सकते क्योंकि वही व्यापारी तो आपका वोटर है जिस पे आप छापे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे याद है आपके कई एमपी ये वादा करते थे चुनाव से पहले कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी तो 3/7 हम समाप्त कर देंगे। क्या आप हैं 3/7 समाप्त करने पे सोच रहे हैं? आप इतना ही बता दीजिए, या तो 3/7 तेजी से लागू कर दिए, 3/7 समाप्त कर दीजिए, क्योंकि काला बाजारी, होर्डिंग, अगर इसको रोकना चाहते तो 3/7 को लागू रखेंगे, और नहीं रोकना चाहते हैं तो 3/7 आपको समाप्त कर दीजिए, जिससे आपका वोटर भी खुश हो जाए। बीच की दुविधा मत रहिए, मैं नहीं चाहता हूं, न आया न गया, इसमें मत रहिए। जो करना तो करिए, डंके की चोट पर करिए, जैसे हमारे नेता मुलायम सिंह जी जो कहते हैं कर देते हैं, उसमें फिर ये नहीं देखते हमें क्या कहना क्या करना। अब डंके की चोट पर करिए, कौन मना आपको कर रहा? आप बैठी हैं निर्मला जी, कंपनी लॉ में आपने एक अमेंडमेंट कर दिया, अगर 2 कंपनी में एक ही व्यक्ति डायरेक्टर है तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में रुपए नहीं ट्रांसफर कर सकता। इसका क्या फायदा हुआ? हम ट्रांसफर करना चाहें तो हम तीसरी कंपनी को पहले रुपए दें और उस तीसरी कंपनी से रुपए लेके फिर अपनी दूसरी कंपनी में लाएं। इस अमेंडमेंट का क्या फायदा? मैं नहीं सोच पाया। आप इस पर देख लीजिएगा, अगर पुनर्विचार कर लें। सेबी आया इस देश में, श्रीमान सेबी कहा गया कि सेबी आएगा, रेगुलेट करेगा, पॉन्जी स्कीम सारी खत्म हो जाएंगी देश में, जो तमाम लोग रुपए मार ले जाते छोटे लोगों का, उसको सेबी रेगुलेट करेगा। करीब 100 कंपनी ऐसी हैं जिनको सेबी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं नाम बताइए उन दे दूं जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का गबन किया। इन्होंने सेबी को पावर देने की इस मारे बात करी, देश के एक बड़े भारी पूंजीपति को इन्हें जेल में डालना था। ये कांग्रेस वाले, इनके यहां से फरमान हुआ, उस समय के वित्त मंत्री जी उस फरमान को लेकर चल दिए। सेबी को इतनी बड़ी पावर देने लगे कि विश्व में किसी भी रेगुलेटर को इतनी बड़ी पावर नहीं थी कि अपना कोर्ट बनाए, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे सजा दे दे, यानी सब काम सेबी कर दे। हम लोगों ने फाइनेंस कमेटी में उसका विरोध किया। हमने कहा पहले पूरे वर्ल्ड की आप सेबी जहां भी रेगुलेटर से उनके कम से कम पावर तो देख लीजिए। आपने सेबी को आज भी, सेबी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, शारदा ग्रुप है, अल्केमिस्ट है, रोज वैली, तमाम ऐसे हैं जिन्होंने जनता का हजारों करोड़ रुपया मार लिया, लेकिन आप चुपचाप हैं। आपका सेबी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि सरकारी दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आपने महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में आप एक नया नारा लेके आए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बड़ा जोर शोर का नारा दिया, सबका सहयोग लेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अब वित्त मंत्री जी तो हमारे लिए निर्मला जी हैं, क्योंकि यही अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भी गई थी। आपने जब बजट बनाया, देश के सारे उद्योगपतियों को आपने बुलाया, लेबर लीडर को बुलाया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया। अगर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो आपको देश के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाना चाहिए। आखिर हमारे राज्य से आप आमदनी लेते हैं, राज्य पे निर्भर है। आपने एक बार भी राज्यों के मुख्यमंत्री से बैठ कर नहीं बात करी कि हम कैसा बजट बनाएं, किस राज्य को क्या जरूरत है। आपने देश के एक किसान से बात नहीं करी। आप कहते देश की हमारी 70% आबादी गांव में रहती है, हमारी अर्थव्यवस्था किस कृषि पे आधारित है। इस देश की अर्थव्यवस्था आज तक भी कृषि पे आधारित है।
लेकिन आपने एक किसान को बुलाना समझा। सारे उद्योगपति, सारे लेबर लीडर, सारे इकोनॉमिस्ट तो आपने बुला लिया, लेकिन अर्थव्यवस्था के रीढ़ को तो आपने छोड़ दिया। हम कैसे मामले हैं कि आपका नारा बहुत अच्छा है, आप किसानों की मदद करना चाहते हैं, आप राज्यों के साथ लेके चलना चाहते हैं। रेलवे बजट में भी यही हुआ, किसी राज्य को नहीं बुलाया गया। हमने तो कहा 1000 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, क्या रेल ने दिया? कल तो रेल मंत्री ने अपने जवाब में उत्तर प्रदेश का नाम लेना नहीं उचित समझा। या तो प्रधानमंत्री उनमें झगड़ा है, प्रधानमंत्री या उनमें झगड़ा है, क्योंकि बीजेपी की आंतरिक कलह हो सकती। प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री गुजरात के नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश का नाम लेना अपनी तौहीनी समझी। अगर वो उत्तर प्रदेश का नाम ले लेते, लगता कि उत्तर प्रदेश में रेलवे बजट की कोई बात नहीं, पूरी उपेक्षा उत्तर प्रदेश की करती, जैसे इस बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करी। मैंने उस दिन स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि एम्स को उत्तर प्रदेश को मिला? कहने नहीं, उत्तर प्रदेश को एक नहीं मिला, रायबरेली को पहले मिल चुका है। क्या लगे, तो पहले मिल चुका है। श्रीमान, नेशनल हाईवे आप उठा लीजिए, सबसे कम नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे साउथ। क्यों उत्तर प्रदेश की उपेक्षा में जो कह रहा हूं? प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के, देश में जितने प्रधानमंत्री बने 90% उत्तर प्रदेश के। और मैंने कहा उत्तर प्रदेश की उपेक्षा ये है। हमने तो कहा कि उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की भी बात नहीं करी। कहां आप देते? मैंने तो कहा हम मानक में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक गरीब देश है, एक गरीब प्रदेश है, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश को कहां प्राथमिकता पे लिया? खाली बनारस में एक मिनी सचिवालय खोलने से उत्तर प्रदेश कोई गरीबी नहीं दूर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा। गंगा साफ होने से खाली उत्तर प्रदेश का नई समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश को, जहां से आपने 72 सीटें जीती, कल्पना के विपरीत 73, कल्पना के विपरीत, उस उत्तर प्रदेश की आप ये उपेक्षा करेंगे? आपके यहां झगड़ा चल रहा है नंबर 2 कौन होगा। अब नंबर 2 पता नहीं कौन होगा, तो पता नहीं कभी आ जाता है। हो गया सर? चलो, हमारे अटॉर्नी जनरल सरकार के जो हैं मैत्रियन, इन्होंने सेटल कर दिया होगा। हम इनको सरकार का अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि सरकार में जो झगड़ा हो मैत्रियन उसको पूरा कर दे। हम तो कहेंगे, बड़ी बहन बैठी, यही बता दें नंबर 2 कौन है आपकी पार्टी में? नहीं बता पाएंगे। डिस्प्यूट, हम आपको विवाद में नहीं डालना चाहते। आप इतनी प्यारी बहन हमारी, हम विवाद में नहीं डालना चाहते। और कोई सी वो जो बता दे, सरकार में झगड़ा, इस बात का देश में सूखा सरकार में झगड़ा कि नंबर 2 कौन है। इसी झगड़े में मैं कहूंगा इसको भी आज घोषित कर दीजिए सरकार में नंबर 2 कौन है और नंबर 3 है। वैसे 2 नंबरी होता बड़ा खराब है, हम लोग तो 2 नंबरी अच्छा नहीं माने जाता, लेकिन अब है झगड़ा। हमारे नाम राशि कुछ बोल रहे हैं, चलिए। श्रीमान, खुदा तुझे भी देखा, इंतजार कर। ये आप अपने ऊपर सीख लीजिएगा। नहीं, हमको तो दे दिया, हमको तो छप्पर फाड़ के दे दिया, 4.5 साल इतना दिया कि झोली में नहीं समा रहा है। काला धन को चुनाव में, काले धन को चुनाव में बड़ी जोर शोर से उठाया गया। ये कहा गया कि ब्लैक मनी, हमारी सरकार बनेगी, हम स्विट्जरलैंड से ब्लैक मनी सारी ले आएंगे, देश की ब्लैक मनी सारी निकाल। बाबा रामदेव भी यही कहते थे, ब्लैक मनी, उन्होंने नारा दिया था बीजेपी के बिहाफ पे। हम लोग भी समझ रहे थे कि सरकार आएगी तुरंत काला धन आएगा। आज मैं पढ़ रहा था कि स्विट्जरलैंड इस बात पे राजी हुआ कि अपनी एक टीम भेज दीजिए, हम वार्ता करेंगे। अभी स्विट्जरलैंड इस बात पे राजी नहीं कि हम नाम आपको देंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड आपको गंभीरता से नहीं लेता। स्विट्जरलैंड तो बैंक ही उसका मुख्य धंधा, मुख्य बिजनेस, पूरी स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी बैंक्स पे चल रही है। और कोई देश अपनी इकोनॉमी आपके लिए खत्म कर देगा? आप कुछ भी कहते रहिए, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने काला धन जमा किया स्विट्जरलैंड में, आप करिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। कल वित्त मंत्री जी गए थे इनकम टैक्स अफसरों के सम्मेलन में,
उन्होंने कहा देश का भी काला धन निकालो। क्या % इनकम टैक्स लोग देश में दे रहे हैं? 3 और 4% से ऊपर देश का आम नागरिक इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। 7-8% आपके कर्मचारी इनकम टैक्स दे रहे हैं। आप 3% से ऊपर इनकम टैक्स देश का नहीं बढ़ा पाए। आप क्या बात करते हैं? ऐसे तो चिदम्बरम जी ने एक बार किया था, देश में लोगों से कह दिया था जितना भी काला धन तुम दिखाओगे हम नहीं पूछेंगे, 30% टैक्स ले लेंगे, लेकिन उससे जो आपका व्हाइट मनी बनेगा उसको कम से कम इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के विकास में लगाइए। क्यों नहीं आप स्कीम ले आते? एक बार आप एक बार ले आइए, डिक्लेरेशन स्कीम ले आइए, वॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम एक बार फिर पूरे देश को मौका दे दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जितनी व्हाइट मनी उससे 3 टाइम ब्लैक मनी मार्केट में है, तो उस ब्लैक मनी को निकालने के लिए आप ये क्यों नहीं लाते? आप कितना छापा मारेंगे? आप बड़े बड़े लोगों के छापा मार देंगे, लेकिन सभी जगह तो छापा नहीं मारेंगे। कितने लोग % आपने बढ़ा दिए? आप खुद आप बता दीजिएगा जवाब में किस देश में कितने % इनकम टैक्स देते? इनकम टैक्स दे ही कितने ने? आपने कहा हमने इनकम टैक्स पे 50,000 की छूट दे दी, तो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर हुई आपकी छूट। कितने लोगों पे काम करें? इनकम टैक्स से क्या फायदा हुआ? अगर आपको वाकई में छूट देना था तो आप किसान के लिए कोई घोषणा करते। आज सवेरे जब हो रहा था कि एनपीए कितना इस देश में, श्रीमंत किसान, गरीबी और महंगाई, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पे तो इस सरकार ने कुछ बात ही नहीं करी। अमेरिका में भी किसान को सब्सिडी दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी किसान को सब्सिडी दी जाती है। जो बड़े मुल्क हैं अमीर किसान है। हमने कहा अमीर छोड़ दीजिए, आप गरीब किसान को, आपका एनपीए 4% बढ़ के हो गया, 2% होना चाहिए। आप हर बार अपनी इक्विटी पूरा करने के लिए सरकार से बैंकों को मदद दे रहे हैं। बैंकों के सीएमडी राजा हैं, जैसे चाहे बैंक से धन खर्च करें, उनको रोकने वाला कोई नहीं। जिस पे खुश हो गए, चाहे बिना कोई गारंटी लिए उनको चाहे जितना लोन दे दें। एनपीए बढ़ता चला जा रहा है। जो लिस्ट आई है, एक आपके सामने लिस्ट में रख रहा हूं, करीब 57,000 करोड़ रुपए बाकी है। बैड लोन की जो लिस्ट की कंपनी निकली है, किंगफिशर 4,022 करोड़, विंसम डायमंड 3,243 करोड़, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया 2,653 करोड़, कारपोरेट पावर 2,487 करोड़, स्टेलिंग बायोटेक 2,031 करोड़, फॉरएवर प्रेसियस 1,754 करोड़, KSL 1,705, जूम डेवलपर 1,400। ये बड़े आपके डिफॉल्टर दिए हैं। अगर किसान पे 1,000 रुपये बाकी हो जाता तो तहसील में बेचारे KRC चली गई होती, मोटा मोटा नाम लाल शब्दों से बाहर लिख दिया जाता, शाम को उसको पकड़ के 14 दिन के लिए तहसील की जेल में डाल दिया जाता। लेकिन इनके लिए क्या ये कानून नहीं है? इस देश में क्या 2 कानून है? बड़े लोगों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। मैंने जो किसान की बात उठाई, सूखा पड़ रहा, क्या आपने घोषणा करी? अब थोड़े दिन में बाढ़ आने की स्थिति शुरू हो जाएगी। बाढ़ आने की स्थिति शुरू होगी तो आप क्या मदद करेंगे? किसान की उपज का मूल आपने खुद अपने घोषणा पत्र में कहा। आप हर जगह कहते थे कि किसान का उपज का मूल, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो जो उपज मूल होगा उसका द्योड़ा, उसका हम मूल्य घोषित करेंगे, जिससे किसान अच्छा जीवन जी सके। अगर 1,000 रुपये उसका उपज मूल आएगा तो आप 1,500 रुपये घोषणा करेंगे। आपने कितना किया? धान में आपने 50-60 रुपये बढ़ा दिया। क्या किसान की लागत का बराबर भी है वो? आज किसान की मार्केटिंग की व्यवस्था आपकी क्या है? किसान अपनी उपज करता है, उसका खरीदने वाले कोई नहीं। अगर बिचौलिए मंडी में ना हो तो किसान को पैसा खाने को नहीं मिलेगा, अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ट्रैक्टर इकोनॉमिकल नहीं, जोत छोटी हो गई है। अगर एक ट्रैक्टर एक किसान खरीद ले, उससे लोडिंग अनलोडिंग ना करे, अगर सामान ना ढोए, तो एग्रीकल्चर के माध्यम से वो उसकी किस्त भी नहीं अदा कर सकता। उस देश के किसान को आप क्या दे रहे हैं? मैंने आपसे कहा छोटी जोत खत्म करने के लिए आप कोई कानून बनाइए जिससे अलाभकारी जोत ना हो, लोगों की रुचि खेती की तरफ समाप्त ना हो। देश ने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, क्योंकि आजादी के बाद 3 बार परिवार बालिग हो गए, 3-3 बार बंटवारा हो गया एक परिवार में, जोत बहुत छोटी हो गई। लेकिन क्यों नहीं आप कानून बनाते? क्यों नहीं किसान में रुचि पैदा करते? क्यों गांव का आदमी शहर की तरफ भाग रहा है? अगर आपकी ये स्थिति बनी रही तो आपका अगर एग्रीकल्चर सिस्टम टूट गया तो कृषि आधारित आपकी अर्थनीति टूट जाएगी, व्यवस्था टूट जाएगी, आमदनी टूट जाएगी। और देश का क्या? श्रीमान, देश प्राथमिकता है। इस देश का अगर किसान, मजदूर, गरीब की बात ना हुई, आज हम सब मानते हैं
आपने तो क्या गरीब की परिभाषा के लिए 4 कमीशन बना दिए। सक्सेना कमीशन, फिर एक हुआ सेन गुप्ता कमीशन, फिर उसके बाद तेंदुलकर कमीशन, इसके बाद रंगराजन कमीशन। वर्ल्ड बैंक को सिर्फ लोन लेने के लिए आपने इन कमीशनों को बैठालकर हिंदुस्तान के गरीबों की संख्या कम करी। और मजाक तो हुआ जब तेंदुलकर ने कह दिया कि 18-20 रुपए गांव में पाने वाला, 23 रुपए शहर में पाने वाला, ये इनकी सरकार ने मजाक किया था। और फिर रंगराजन ने आपकी सरकार में कर दिया कि 33 रुपए और 47 रुपए वाला इस देश में गरीब नहीं रहेगा। हमने तो रंगराजन जी से कहा कि हम 100 रुपए अपनी जेब से देते, तुम गांव में एक रात रहकर दोनों टाइम खाना खा लो तो मैं समझूंगा तुम एक सही रिपोर्ट दी। लेकिन नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को इनको दिखाना है कि हमने आपसे जो लोन लिया, विश्व की और बैंक्स को दिखाना है कि हमने आपसे जो गरीबी हटाने के लिए लोन लिया, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए लोन लिया, उस लोन के से माध्यम से हमने देश में गरीबी बढ़ा दी। इन फर्जी आंकड़ों से कोई फायदा नहीं होगा। आपको सत्यता पर चलना पड़ेगा। इस देश की गरीबी, बेरोजगारी पर अगर आपने विचार नहीं किया, इस देश को आप सत्यता से, आप सही माने में इस देश की डेवलपमेंट की बात नहीं की, तो सरकारें तो आती जाती रहेंगी। लेकिन अगर देश गरीब रहा, देश का हित ना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम राजनीतिक तनख्वाह लेने के लिए नहीं आए हैं, विचारों को देख के देश की समस्या को समाधान करने के लिए आए हैं। I am also enjoying your speech, but मैं क्या करूँ टाइम। चलिए मैं खत्म लेकिन बात ये, चलिए आप वोट देखिए, आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए 5 मिनट दे दीजिए। इसलिए ओके, टेक 2-3 मिनट्स मोर। महंगाई की बात कर रहे हैं श्रीमान। सरकारी आंकड़ों में निकल जाता है कि थोक मूल्यांक कम हुआ, महंगाई पे भी हमने रोक लगा दी। अब फुटकर थूक सूचकांक जो है वो 9.3, 9.4, 13 से हम 9% लिया है। हमारे तक समझ नहीं पाए 9% 13% क्या। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि टमाटर के दाम 300% बढ़ गए, 300%। प्याज के दाम 50%। आप भी सब बैठे हुए हैं, तरुण भाई हम बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हो तो आप हमारी बात काट दीजिएगा। मैं तो सारे अखबारों में आज सवेरे में पढ़ रहा था कि प्याज के दाम 300% और टमाटर, प्याज के दाम 50%। आज जो एक जमाने में जो हम लोग सब्जी खरीदते थे तो हरी मिर्च, पुदीना और धनिया मुफ्त दे दी जाती थी। जब हम लोग छोटे पे, हम भी चाहते थे लेने बाजार में, तो उसकी वो साथ में मुफ्त दे देता था, हरी मिर्च 3। अब तो श्रीमान मुफ्त तो छोड़िए, पहले तो 100 रुपए में 1 महीने की सब्जी ले आते थे, अब तो 1000 रुपए में 1 दिन की सब्जी नहीं मिल रही। आप स्वीकार क्यों नहीं करते देश में महंगाई? 500 करोड़ रुपए का आपने बजट रख दिया कि महंगाई दूर करेंगे। 500 करोड़ में कौन सी महंगाई दूर हो जाएगी? आप बता दीजिए 500 करोड़ में कैसे महंगाई दूर करेंगे? कहां पर 500 करोड़ लगाएंगे? प्याज में सब्सिडी में लगाएंगे, टमाटर में लगाएंगे, किसान के बीज में लगाएंगे, खाद में लगाएंगे, अन्य सब्जियों में आटा, दाल, घी, सभी चीजें तो आदमी को जरूरत होती है। मैं चाहता हूं कि 500 करोड़ का बाइफर्केशन करके बता दें पूरा देश, जिससे सुने कि आपने जो 500 करोड़ रुपए महंगाई रोकने के लिए रखे हैं, वो 500 करोड़ कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए रखे हैं जो महंगाई को रोकेंगे, कि 500 करोड़ रुपए इस देश में महंगाई रोकने के लिए आपने रखे। क्योंकि एक शक है, लोगों के दिमाग में शंका है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कौन महंगाई रोकने जाएगा, किसको आप इस्तेमाल करेंगे? राज्य सरकारों को देंगे तो कितना कितना रुपया राज्य सरकारों के जिम्मे पड़ा। आखिर एडवर्टीजमेंट पे देंगे तो एडवर्टीजमेंट इतना महंगा हो गया, उनमें 500 करोड़ का पता ही नहीं चलेगा। तो 500 करोड़ रुपया आप कैसे खर्च करेंगे? महंगाई कैसे रुकेगी? खाली आंकड़ों पर न जाइए। अभी कुछ दिन पहले इस सदन में महंगाई पर चर्चा हो रही थी, सारे सदन ने उस पर चिंता व्यक्त की, चाहे इधर का चाहे उधर हो। जो चीज सही है सब आदमी बोलते हैं, सदन, पूरे सदन ने चिंता व्यक्त की। और ये मत सोचिए महंगाई से आपके नंबर कम हो रहे हैं, ये मत सोचिए आलोचना महंगाई से आप आए। ये ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लोग नहीं सुनना चाहते थे, हम लोग खुद चुनाव हारे, चुनाव हारने के बाद हम जान रहे थे जनता का मूड क्या है। लेकिन जब आपकी आलोचना शुरू हुई तो हिम्मत हम लोगों की बनी कि चलिए कहीं पर से तो शुरुआत हुई। हम लोग तो उत्तर प्रदेश वाले हैं। अभी समाप्त कीजिए, चलिए हम जल्दी खत्म करें। हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम लोग तो कहीं भी मौका मिले, हम राजनीतिक स्टेट हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी को भी गुजरात से उत्तर प्रदेश आना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए।
क्योंकि वो जानते थे गुजरात में से जीते कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, हमने हरदम कहा कि व्यापारी सफल गुजराती दे सकता है लेकिन नेता सफल उत्तर प्रदेश का ही देगा। ये मान चलिएगा, इस देश में सफल राजनीतिक अगर कोई पैदा करता तो उत्तर प्रदेश पैदा करता। राजनीति की दिशा अगर कोई देते हैं उत्तर प्रदेश देता है। इसी हमारे प्रधानमंत्री सब उत्तर प्रदेश के होते हैं। और पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी तो लिखा पढ़ी में थे, रिमोट तो 10 जनपद में था, वो भी उत्तर प्रदेश से था। मैं तो बड़ा साफ कहता था, रिमोट 10 जनपद में था। आज भी कहीं ना कहीं रिमोट है। आरएसएस का कैंप कहाँ है? झंडे वाला वहां पे है रिमोट। ओके, लेकिन चलिए हमारे बड़े भाई आ गए, मैं तो सोच रहा था प्लीज। ओके, चलिए मैं अंत में, चलिए अभी तो बहुत कुछ कहना था लेकिन क्या मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा। आदरणीय जेटली जी, आप जब इधर बैठे थे मैं बहुत कुछ सीखता था आपसे। एकदम मुझको भी राजनीति में 35 साल हो गए। ये ठीक था, लोअर हाउस में थे, विधानसभा में था, मंत्री रहा, राजनीतिक कलाबाजी भी वहां सीखी, आंकड़ों की जादूगरी भी वहां सीखी, पक्ष में कैसा बोला जाए, विपक्ष में कैसा बोला जाए, सरकार कैसे बनाए कैसे बिगाड़े, ये भी हमने बहुत किया। इसकी भी कलाकारी हमने बहुत अच्छी की है। लेकिन हम सबका एक उद्देश्य है, एक सोच के साथ आए हैं कि अगर हिंदुस्तान हमारा अच्छा रहेगा तो हम सब अच्छे हैं और जीने का फायदा है, राजनीति करने का फायदा है। अगर हमारा हिंदुस्तान अच्छा ना हुआ, हम राजनीति करते रहे तो शायद हम अपने कर्तव्यों की इत्तश्री नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि बजट के प्रावधानों में जो मैंने बातें उठाई हैं, आप नहीं थे, आप पढ़ लीजिएगा, उन चीजों को भी सोच के अगर आप बजट में थोड़ा बदलाव करेंगे और वाकई में देश के किसान, गरीब और इस देश में रामराज की कल्पना करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, अन्यथा डट के विरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, गुड, धन्यवाद। नाउ श्री पी राजीव। Thank you, Mr. Deputy Chairman. We are discussing the maiden budget of the BJP government, NDA government. Sir, in the first sentence of the budget speech of the Honorable Finance Minister, used the word change. It remains as a word without any implication. We could not find any change of policies in the debate budget of the NDA government. It is as same as the UPA government. We have seen our respected Deputy Leader of Congress, Anand Sharma ji, strongly arguing for getting the pattern of Mr. Jetli ji's budget. Sir, former Prime Minister Manmohan Singh ji has ascertained that this is the same pattern of his government budgets. I quote, "This is a budget which could have well been presented by the UPA itself," which is a comment of former Prime Minister Manmohan Singh ji. Sir, the former Prime Minister Mr. Chidambaram congratulated Mr. Jetli for following his own policies. And true, the Honorable Finance Minister did not hide his awe for his predecessors with regard to fiscal consolidation. Sir, this side and that side, actually two sides of the same coin. Then what about the main beneficiaries, their opinion? The last issue of Outlook is consolidate the opinions of the corporate sector. 2014, with regard to the latest budget, Kumaramangalam Birla, this budget signals to investors that India is here to do business in a stable and predictable way. What was his opinion on the 2013 budget? Inclusive and sustainable growth. What was his opinion in 2012 budget? Send positive signal. Then Chairman HDFC, 2014, a good beginning. 2013, a sensible budget. 2012, a reasonable, equitable and balanceable budget. Confederation of Indian Industries, 2014, meets the expectation of industry. 2013, we welcome the budget. It focuses on inclusive and sustainable human development. Silence, please. Sir, this is, and I would not like to take all comments because of scarcity of time.
the corporate world welcomes